Hello, my name is Uzma Devan and today I will present you my electric motor well. In this word motor well, you mean that this is the well and this is the motor. This is the motor. It rotates and it lifting up the bucket, and I will show you an example. It's not working to down the load. So what was it from? It's okay. We say that releasing the load. रिलीज करना बोलते हैं उसे. हाँ. And these are the pieces of cardboard, and here is the rod. In this here is the pulley, and here is the hollow. It has a thread that connects to a bucket. In this jar, and this thread connects to a motor. And this is the DPDT switch. DPDT switch helps in to rotate, to lifting up and release this bucket, and this is the pulley. Pulley helps in to save energy. And in villages, you have all seen that. Except motor, there are people lifting up this thread, and this is the weight, and there is the water. So it takes energy to people there in villages to take and release the water weight. Sorry, starting from the beginning. No, of course. Yes. And here is the base. DPDT switch helps in to release and lift up the weight. And here I have a special hollow when that so that the pulley Does not move. And it saves time and energy. DPDT switch क्यों use किया है? I have used a DPDT switch because it releases and it lifts up the weight. It lifts up DPDT and it releases it again. Okay. ये जो मोटर लगाया है जिसकी वजह से हेल्प मिल रही है ये करने में, रिलीज करने में, पुल करने में, कितना भी वजन कर सकता है, जितना भी वजन हो बकेट का, 4 kgs, 100 kgs, 400 kgs. उसके लिए हमें वो थोड़ी सी बड़ी मोटर चाहिए, जो बड़ी या more powerful motor. Any questions? Questions? पूछना है किसी को कुछ? वो जो थ्रेड है वो थ्रेड अगर हम लोग मतलब DPDT स्विच को ऑन करते हैं तब वो रोटेट होता है ना, मतलब वो थ्रेड रिलीज कर
करती है, वो इस साइड वो रिपीटेटिव स्विच है, वो नॉर्मल स्विच काम नहीं कर सकता, वो वैसे काम नहीं कर सकता। रिपीटेटिव स्विच वो रिलीज भी करती है और लिफ्ट अप भी करती है, और वो रोटेट नहीं करती, वो बस नीचे जाती है और वापस ऊपर आती है। मोर क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? श्योर। पुली के बिना काम चल जाता? पुली के बिना मतलब मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मोटर से रस्सी बांधी और सीधे ऐसे कुएं में ऐसे डाल दी, पुली पे से ले जाने का क्या? बट ये जो रॉड है वो थोड़ा सा वो टूट भी सकती है, और प्लस पुली पुली वो जो ये पुली है वो हेल्प करता है थोड़ा सा लिफ्ट मतलब करने में, इजी करता है हमारा काम। पुली इजी कर देता है हमारा काम। अगर ये बकेट 5 kg की होगी तो उसको 4 kg, जब हम लिफ्ट करेंगे तो हम वो 5 kg नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ओके। कैसे मतलब कैसे वो वेट कम करेगा पुली? मतलब हम लोग को पुली इज अ सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। बट शी इज आस्किंग कि पुली क्यों, कैसे एफर्ट को कम कर देता है, कोई रीजन होगा? ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, फाइंड इट आउट लेटर। किसी को कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ और ऐड करना है इसमें? नो सर। श्योर। यस सर। थैंक यू।